Okay, next concept that we are going to study is batch production. What is batch production? Batch production is basically when production is broken down into separate operations that each are completed in turn on a group or a batch of products at the same time. For example, look at the bakery. They are producing biscuits of one kind. They pass from the mixing stage and enter into another stage, that is heating, for example, in which their shapes are drawn. Then they enter into another stage that is called packing, for example. So they pass on one stage, another set of biscuit comes into the first stage. It means that when the first set of biscuits pass to the heating, the second set of biscuits comes into the mixing, for example. When the first one goes to the packing, the second one comes into the heating, the third one comes into the mixing. This way it goes on and goes on. This process is called batch production. In batch production, similar items are prepared in batches. For example, in the shoes, there will be one batch of brown shoes, then there will be one batch of black shoes. There will be one batch of 6 number shoes, then there will be one batch of 7 number shoes, for example. So this is what we call a batch production. If we look at the requirements of the batch production, labor and machines must be flexible to switch between the batches because they are making different commodities now, so they need to switch between the batches. We were talking about the batch production, and I was saying that batch production is the when processes are divided into batches. So हमने कहा कि group of identical products pass through each stage together, और फिर वो दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज शुरू हो जाती है। उसमें प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से पास डाउन होती रहती हैं एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक। अच्छा, अब बैच प्रोडक्शन में हमने कहा कि उसकी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले है कि लेबर एंड मशीन्स मस्ट बी वेरी फ्लेक्सिबल टू स्विच टू मेकिंग बैचेस, क्योंकि आपको कभी एक तरह की चीज बना हो सकता है वो सिमिलर ही हो, लेकिन डिफरेंट उनमें कुछ ना कुछ नेचर में वेरिएशन तो हो ही सकती है, तो आपको बनानी पड़ सकती है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। अगर हम बैच प्रोडक्शन के एडवांटेजेस की बात करें तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं। सम इकोनॉमीज यू में से, क्योंकि पहला पहले से ज्यादा जॉब से तो ज्यादा ही चीजें बना रहे होते हैं। सम इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर ऑब्टेन्ड। दूसरा, relatively faster production as compared to job production. क्योंकि फ्लो प्रोडक्शन जो थर्ड वन हम पढ़ेंगे उसकी जरा स्पीडी तो नहीं है, लेकिन जॉब प्रोडक्शन से बहरहाल फिर भी ज्यादा स्पीड से चीजें बन रही होती हैं। और फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइन एंड साइज ऑफ द प्रोडक्ट्स। कैन वेरी ईच बैच, थोड़ी भी बना सकते हैं, ज्यादा भी बना सकते हैं। कैन चेंज ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे चेंजेस की जरूरत पड़े। इन बिटवीन, तो इसमें काफी पॉसिबिलिटीज होती हैं। कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस of batch production, the chances of wastages are very high, especially when you are shifting from one type of product to another.
Sometimes we need to reset the machine for another product, so it takes time. Time taking when resetting the machines. Similarly, you need to save the inventory. The cost of that inventory will also be high. These are the few advantages and disadvantages of batch production technique.